देवनाथ सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन की राह लौटते हुए और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं अरुण शर्मा, जो पिछले दोनों ही मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हैं। देखते हैं इस फाइनल मुकाबला में क्या कर पाते हैं। एचपीएल कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला एसपी 11 वर्सेस सीआईएसएफ 11 के बीच खेला जा रहा है। अच्छी बॉल संजय दलाई की, 90 तुली बॉल। Tried to play it by the edge. The batsman couldn't make a contact with the ball. With this, the current score is 9. संजय दलाई अभी तक एक भी रन नहीं दिए हैं इस ओवर में। क्षेत्र चरण में थोड़ी तब्दीली करते हुए अरुण शर्मा एक जाने माने हिटर जाने जाते हैं। We have seen beautiful performance from Mr. Sanjay in the previous matches. और संजय दलाई के द्वारा ये मेडन ओवर, इस टूर्नामेंट का दूसरा मेडन ओवर जो संजय दलाई ने ही डाला है। इसके पहले वो अपने मैच में डाले थे एक मेडन ओवर और ये दूसरा मेडन ओवर। 2 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। No doubt that SP 11 chooses Sanjay over and over again. That's an excellent bowling by Sanjay Dalai. एसपी 11 की तरफ से बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। अभी तक एसपी 11 के गेंदबाज अपने कप्तान एमएम हसन के निर्णय पर खरे उतरे हैं। Team CISF needs to change, needs to और नए गेंदबाज के रूप में आए हैं दिव्येंदु। faced by Yafi. अच्छी बॉल कट करना चाहते थे। Out appeal from the team. But the बहुत ही umpire, तेज अपील, लेकिन अंपायर with his ने hands पूरी full. तरीके से नकार दिया। Strong hit. Saved by और the बहुत ही pitcher. अच्छी फील्डिंग यहाँ पर एसपी 11 के छक्का द्वारा। Nicely played towards the deep and managed to take 1 run. Mr. Arun Sharma hitting huge sixes as always. और ये अरुण शर्मा का पहला छक्का है इस मैच का। अरुण शर्मा का चलना बहुत ही जरूरी है इस मैच में। अगर एसपी 11 को अच्छा टारगेट देना चाहते हैं सीआईएसएफ 11 के खिलाड़ी। Trying to go for another boundary, but the bowler knew what to do. स्लोअर बॉल थी, बीट किया अरुण शर्मा को। और बीच से उठा के खेल दिया है। कौन से लिए लॉन्ग पे कैच दे बैठे अरुण शर्मा, जो पिछले दोनों मैच में ही मैन ऑफ द मैच रहे थे। इस मैच में
सिर्फ 8 रन बना के पवेलियन की राह लौटते हुए। Team SP11 still rejoicing over the last. और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं। The new batsman entering the field is Mr. S. Kolita. अगली बॉल एस कलिता को। पहली बॉल थी, अच्छी बॉल थी, कट किया स्लिप के दिशा में, 1 रन चुराने में कामयाब हुए एस कलिता। इस तरह से अपना खाता भी खोलते हुए और इस 1 रनों की सहायता से टीम का स्कोर 17 रन। तीन ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 17 रन्स एट द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। Team CISF seems to discuss among themselves. SP11 की तरफ से बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी। CISF के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। HPL कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला SP11 वर्सेस CISF 11 के बीच खेला जा रहा है। Beautiful piece of bowling from Sanjay. संजय दलाई पिछला ओवर मिडन दिए थे। Let's see if he can make this one again. और ये Nice उठा one. के खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। Nicely played, nicely played. और ये जेके बंसल का एक नाटकीय अंदाज में 6 रनों का डिसीजन। फाइनल मैच में जेके बंसल और अभिजीत मंडल एम्पायरिंग कर रहे हैं। फिर से कलिता ने उठा के खेल दिया स्क्वायर लेग किसी दिशा में, लेकिन सिर्फ 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा Caught on the fine कलिता leg. को। इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 24 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। The 4th over is currently running. अच्छी गेंद, गुड लेंथ की बॉल थी। The batsman could do nothing rather than staying ideal. Another dot अच्छी ball. बॉल बीट हुए पूरी तरीके से। थोड़ी सी लय से भटके थे संजय दलाई, तब कलिता ने उनके ऊपर छक्का जड़ा था, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक 2 बॉलों पे बीट किया। Mr. Sanjay maintaining his आशीष को। consistency. Another beautiful dot ball. इस तरह से ओवर की समाप्ति हुई और 3 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 17 रन्स, सॉरी 4 ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 24 रन्स, लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
The final between CISF and SP11 is currently ongoing. The match is of 10 overs. CISF और SP11 के बीच ये फाइनल मुकाबला, जिसमें SP11 टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और CISF के बल्लेबाज अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं। सिर्फ 4 ओवर में 24 रन बनाने में कामयाब हुए। लेकिन जैसे SP11 अभी अपने बाकी मैचों में बल्लेबाजी की है, वैसे उनके लिए ये टेढ़ी खीर साबित नहीं होगी। Both the teams are taking their time. नए गेंदबाज के रूप में आए हैं दिव्येंदु और कलिता ने कट कर दिया। And nicely saved by the fielder. On the Excellent long fielding. on. Let team CISF take only 1 run. Nicely placed towards the tip backwards. आशीष और कलिता को एक साझेदारी बनानी होगी अगर उनको ये मैच जीतनी है तो। True. अच्छा स्कोर, एक टारगेट सेट करना होगा। अच्छी बॉल, अच्छी लाइन लेंथ और बीट किया बुरी तरीके से। कलिता को समझ नहीं पाया, बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में गई। Team CISF set a huge target for Team HDA in the last match, but doesn't seem to make it in this match. अगली बॉल और ये कट बिहाइंड हो गए। Here goes the fingers. कलिता up in the air of the को umpire. कट बिहाइंड करके पवेलियन की राह भेज दिया है। Another wicket taken by दिव्येंदु Team ने। SP11. With this, the score is 26 at the loss of 3. आपको बता दें, CISF और SP11 दोनों ही पहली बार HPL कप 2022 में शिरकत कर रही है और दोनों ही फाइनल में जगह बनाने में कामयाब हुए। It's really a very big achievement for them, and they must be glad that they made it to the finals on the very first time. और बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी SP11 के द्वारा। नए बल्लेबाज भारती, Another huge shot. शॉर्ट पिच बॉल थी। Took the advantage of the short ball. भारती ने पहले ही बॉल पे छक्का मारा। धीरे धीरे ओस की बूंदें भी बढ़ती हुई और दर्शकों में भी इजाफा होता हुआ। The 5th over is currently running. Nicely played and in the hands. Straight back to the bowler. HPL कप 2022 का यह फाइनल मुकाबला HRL के सुनारा मैदान पर खेला जा रहा है।
CISF वर्सेज SP11 के बीच। SP11 अभी तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। CISF 5 ओवर में 32 रन बनाए हैं 3 विकेट के नुकसान पर। After a heavy downpour in the morning, we did not expect that we will be able to hold the semi-finals and finals, but here we are. और हमारे साथी कमेंटेटर अपने जादुई छड़ी घुमाते हुए बता रहे हैं कि दर्शकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच चुकी है। नए गेंदबाज के रूप में आया है संजय दलाई। पहला ओवर मेडन डाले थे, दूसरा ओवर में 7 रन दिया था। Team SP11 again gives the bowling to Sanjay. But और ये अच्छी गेंद। the ball goes high in the air, but couldn't make it to the boundary. A slight mistake by the fielders, and another run took by the और एक बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग बंसल द्वारा। Very experienced decision took by the umpire. बंसल जो बिली बॉर्डन को अपना गुरु मानते हैं, अभी तक उनके पास 100 मैचों का अनुभव। और ये कट बिहाइंड हो गया है आशीष। Straight to the hands of the keeper. Another wicket gone for team CISF. विशाल। Team CISF needs to protect their wickets. Team CISF is currently at the loss of 4. They really need to protect their wickets because any other loss would cost them a lot. टीम CISF को एक सूझ भरी पारी खेलनी पड़ेगी यहां पर। ऐसे लग रहा है जैसे तू चल मैं आया। उनको इस मैच को खत्म करने की बहुत जल्दी है। टीम SP11 अच्छा टारगेट सेट करना होगा उनको अगर ये मैच जीतना है तो। Team SP11 is leaving no chance, proving their bowling, creating huge pressure on Team CISF. नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं समल। And Mr. Bharti is on non-strike. ह्यूज अपील टीम SP11 के सारे ही शतक द्वारा, लेकिन बंसल ने पूरी तरीके से नकार दिया। Purely denied by the umpire. SP11 वर्सेस CISF11 के बीच ये फाइनल मुकाबला। अच्छी बॉल, ब्लॉक होल में बॉल थी, समझ नहीं पाए CISF के बल्लेबाज, बीट हुए। The batsman tried to hit the ball but couldn't make any contact. The 6th over is currently in progress. Nice bowling and beautiful caught by the sleep, saved by the sleep. विकेट कीपर मिंटू दास और SM हसन का अच्छा कॉम्बिनेशन, स्लीप और विकेट कीपर का। विकेट कीपर ने मिस किया तो स्लीप फील्डर ने फील्ड कर लिया। Team SP11 currently bowling tight length. और ये समल खेल दिया है। Nicely played towards the cover slip. And 4 runs given by the umpire.
इस 4 रनों की सहायता से टीम का स्कोर 38 रन। छह ओवर की समाप्ति पे टीम का स्कोर 38 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट्स और 24 गेंदे बाकी। देखते हैं सीआईएसएफ के बल्लेबाज क्या कर पाते हैं। Team CISF changed their bats to bring changes in the batting pattern. They really need to hit some boundaries in order to put a huge target for Team SP11. शायद ये उनका लक्की बैट होगा। Might be. Let's see what changes can this lucky charm make. Team SP11 chooses Mintu as their next bowler. Mr. Mintu made a very beautiful performance during the last few matches. He did excellent bowling as well as beautiful keeping as well as beautiful batting. और भारती ये उठा के लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है 6 रनों के लिए। Valuable 6 taken by CISF. इस 6 रनों की सहायता से टीम का स्कोर 44 रन्स। Maybe the lucky charm is doing his job. अच्छी बॉल ऑफ साइड में बॉल थी। भारतीय एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वाइड हो जाएगी, बट एम्पायर ने नकारा। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी ये स्कोर अटका हुआ 44 रन पर। High above the commentary box and again a 6. भारती ने पिछले ओवर में इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 50 रन्स। CISF trying to maintain their run rate, rather increasing it. भारती ने पिछले ओवर में अपना बल्ला बदला था और इस ओवर में मैच का थोड़ा थोड़ा रुख भी बदलते हुए The match is going slightly other direction. Some hope for Team CISF. और भारती ने फिर से उठा के खेला है, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रयास विकेट कीपर के द्वारा। Nice try by the कैच wicketkeeper. लपकने में नाकामयाब हुए। सिर्फ Stole 2 runs in between the wickets. 1 run. इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 51 रन्स। Another 3 overs left after this one. Another nice hit. और सामल का ये पहला छक्का पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से। Nicely played in the deep backward point. Team CISF trying to take maximum runs. एचपीएल कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला सीआईएसएफ वर्सेज SP11 के बीच खेला जा रहा है।
सीआईएसएफ अभी तक 57 रन बना चुकी है। Team CISF not looking satisfied with the runs they made in this one. During the last match, they set a target of 155 for Team HDA. Another strong hit. और सामल का ये एक Nicely शानदार played on the छक्का long लॉन्ग on. ऑफ के दिशा में। सामल का ये दूसरा छक्का इस ओवर में, और इस छक्के की मदद से स्कोर थोड़ी रफ्तार पकड़ती हुई 63 रन्स। The scoreboard looks to steeply increase. मिंटू दास के इस ओवर में सीआईएसएफ के बल्लेबाज 25 रन जोड़े अपने खाते में। खासे महंगे साबित हुए मिंटू दास। टीम सीआईएसएफ का स्कोर 7 ओवर के बाद 63 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। The current run rate for Team CISF is 9.00. सामल और भारती के क्रीज पे आने के बाद टीम सीआईएसएफ का लग रही है कि ट्रेन थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ा दी है। A much needed change in the fielding was needed. नए गेंदबाज गौरंगो Bharti to face ball from Gourango. A very और wide ये ball. बंसल का एक और अनोखा अंदाज में वाइड। ये शायद बगल में एक और पिच रहती तो भी वाइड करा दिया जाता। और ये And the high भारती ने up in the उठा air, के खेल piercing the दिया है sky. कमेंट्री बॉक्स के ऊपर 6 रनों के लिए। Hit the commentary box and a huge six. ह्यूज 6, और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 70 रन्स। सीआईएसएफ के बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बटोरने में लगे हुए हैं। Trying to फिर go से for उठा another के big खेलना one. चाहते थे, मिस टाइम हुए और विकेट कीपर ने भी मिस किया। सिर्फ 1 रन चुराने में कामयाब रहे। Took one run by. The current score is 71. और ये बहुत ही एक शानदार छेदछड़। Beautifully saved by the fielder. कभी कभी हाथ झुकाने में जब टाइम लग जाती है तो बॉल सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई चली जाती है। इसलिए SP11 के छेदछक पैर भी यूज कर रहे हैं। Successfully made a dot ball. टीम का स्कोर अभी भी अटका हुआ 72 रन्स। Team CISF still cannot predict the balls. ओवर पिच बॉल थी, उठा के खेलना चाहते थे, कनेक्ट नहीं कर पाए। बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। As we know, Team SP11 has showcasing bowling. अगली बॉल और फिर से उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन के दिशा में 6 रनों के लिए। जेके बंसल का एक अनोखा अंदाज जो बिली वर्डन से बहुत ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इस 6 रनों की सहायता से टीम का स्कोर
78 रन्स। गौरंगो का ओवर भी समाप्त हुआ। 8 ओवर की समाप्ति पे टीम सीआईएसएफ का स्कोर 78 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। The current match is playing between Team CISF and SP11. 8 overs are over still now. Another 2 overs to go for this inning. आपको बता दे यह मैच 10 ओवरों की होगी। टीम सीआईएसएफ वर्सेज SP11 के बीच ये फाइनल मुकाबला रोमांच के चरम सीमा पर पहुंचती हुई, और ये उठा के खेल दिया है सामन ने, लेकिन एक शानदार कैच, Beautifully caught by the fielder on the long off. Beautifully caught by Dibendu on the long off. अपने हाइट का भरपूर फायदा उठाते हुए दिबेंदु ने अच्छा कैच रखा लॉन्ग ऑन की दिशा में। Good fielding setup by team SP11. भारतीय एक अच्छा इनिंग्स के बाद पवेलियन की राह लौटते हुए और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं जेडी प्रसाद। भारतीय जो 12 बॉल में 31 रन बनाए। भारतीय एक ऐसे समय पर आए थे जब टीम अच्छा खासा जूझ रही थी, एक अच्छी रणगति देकर गए हैं। देखते हैं उनके साथी खिलाड़ी कहां तक उनके साथ निभा पाते हैं। अच्छी बॉल जेडी प्रसाद समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। Team CISF relying on their batsman. Another tie shot up in the air. And a nice 6. जेडी प्रसाद का यह पहला छक्का कवर की दिशा में। The new batsman Mr. देखते रह गए और बॉल उनके सर के ऊपर से चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। The new batsman Mr. JD Prasad proved to be lucky for the team. और ये जेडी प्रसाद फिर से उठा के खेल दिए हैं और एक अच्छा कैच हो सकता था अगर दोनों ही खिलाड़ी एक तालमेल के साथ लपक के बॉडी एक अच्छा क्षेत्रक्षण बोलेंगे। No comments for the fielding. It was a tough catch, but somehow managed to save the boundary. अभी अभी जो माहौल बना है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड खेला जो हो रहा है कहां पे अभी 84 रन पे जो बल्लेबाजी चल रहा है, अभी देखना है कहां तक पहुंचेगा। और ये जो बहुत ही फाइटिंग बिटवीन SP11 एंड CISF, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सर। Try to go for big, but into the hands of the keeper. With this, Mr. Bharti leaves the field. A bit of confusion on the field. इस तरह से सीआईएसएफ का 5वां विकेट गिरता हुआ और टीम का स्कोर The umpire gives it out.
टीम का स्कोर 85 रन्स फॉर 6, सॉरी 9 ओवर में टीम सीआईएसएफ का स्कोर 85 रन्स, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। The next batsman entering the field is Mr. P. Venkatesh. Still there is chance for team CISF to make a good target. Nicely placed towards the mid-off. Take only 1 run. नए बल्लेबाज वेंकटेश। अच्छी बॉल, लेकिन ये रन आउट हो गए। A slight mistake and another wicket for team CISF. नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं देश दीपक, जो देश की सेवा में तो लगे ही हैं, देखते हैं अपनी टीम की सेवा में कितना तत्परता से रनों का योग करते हैं। एचपीएल कप 2022 का ये फाइनल मुकाबला सीआईएसएफ 11 वर्सेज एसपी 11 के बीच एचआरएल के सुनहरा मैदान पर Another dot ball. Let me tell you that this is the very first time that team CISF and team SP11 are participating in HPL Cup tournament, and they have made it to the finals successfully. Slightly played by the batsman. Took 1 run. The score is 57. Sorry, the score is 87 at the loss of 6 wickets. और ये बंसल एम्पायर का एक और ही अनोखा अंदाज में वाइड। We are currently at the very end of these innings. स्ट्राइक पर है पी वेंकटेश। Left the batsman just stand ideal over there. Could make no changes in the scoreboard. और ये खेल दिया वेंकटेश ने लॉन्ग ऑफ के साइड में, लेकिन अच्छा क्षेत्र शॉट, सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब हुए। दूसरे रन बनाने के चक्कर में रन आउट हो गए और इस 1 रनों की सहायता से टीम का स्कोर टीम सीआईएसएफ का स्कोर 89 रन्स। टीम एसपी11 को इस फाइनल मुकाबले के जीतने के लिए 90 रन बनाने होंगे 60 बॉल में। Nice play by CISF. They made 89 runs, setting a target of 90 runs for team SP11. And we are currently at the end of the first innings. The second innings is about to begin any moment. CISF 11 और SP 11 के बीच ये फाइनल मुकाबला, जिसमें SP 11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र छाड़ करने का निर्णय लिया। SP 11 के कप्तान MM हसन के निर्णय पर बाकी खिलाड़ी खरे उतरे अभी तक।
Team CISF and Team SP11 both are very experienced teams. We cannot predict any outcome beforehand. टीम CISF 11 89 रन बनाने में कामयाब हुए। SP11 को इस HPL कप को जीतने के लिए 90 रन बनाने होंगे 60 गेंदों में। Team SP11 gave 89 runs in this match, and this is the maximum run they gave to their opponent. Highly cheerful, the team CISF enters the field. CISF के छत्रछक धीरे धीरे कदमों से मैदान में प्रवेश करते हुए SP11 की तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी संजय दलाई, जो 3 ओवर में 1 मेडन दिए, 13 रन दिए और 2 विकेट झटके। Currently maintenance of the pitch is going on. Very good support from the staff members of team of HPL. और SP11 की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं MM हसन, जो टीम के कप्तान भी हैं, और अलोकेश। Currently entering the field from team SP11. SP11 वर्सेस CISF 11 के बीच ये फाइनल मुकाबला, जिसमें SP11 ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया था। CISF 11 10 ओवर में 89 रन बनाने में कामयाब हुए। SP11 को यह कप जीतने के लिए 90 रन बनाने होंगे। We are very lucky that the weather was in favor of us after the first downpour. सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं MM हसन और अलोकेश। अलोकेश जो अपने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की थी, 7 गगनचुंबी छक्के जड़े थे, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया था। देखते हैं इस फाइनल मुकाबला में क्या कर पाते हैं, क्या गुल खिला पाते हैं। Currently the time is 7 p.m. in the evening and in the floodlights of HPL ground, the second innings of the match between CISF and SP11 is being played. After a successful first inning, both the teams are prepared for the second one. CISF needs to plan their fielding, because that's the only way they can suppress team SP11. इस फाइनल मैच के एम्पायरिंग कर रहे हैं JK बंसल और अभिजीत मंडल। Both are very experienced umpire, and they have been doing umpiring for the last 20 to 25 years. No better umpire could have been. JK बंसल जो बिली बटन से ट्रेनिंग ले चुके हैं एम्पायरिंग के लिए।
All set. About to begin the second innings. The first ball from Prakash Singh. And with this, SP11 makes 4 runs and opens the book for team SP11. Second ball. Played the same way, but this time the fielder saved the ball. Could take only 1 run. With this, the score for team SP11 is 5 and no loss. बहुत ही लूज बॉल, एम्पायर ने वाइड करार दिया। पूरी वाइड तरीके बॉल। से दिशा से भटकी हुई गेंद। A good delivery. अच्छी गेंद, पूरी तरीके से सम्मान दिया इमाम हसन ने। Nicely kept by the batsman. Currently on strike is Mr. M.M. Hassan. Short ball. Saved by the fielder. Nice piece of fielding. All the fielders look very alert for team CISF. सीआईएसएफ की तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं प्रकाश सिंह। From medical end. सम्मान दिया आलोकेश ने पूरी तरीके से। Just kept the ball. Made no effort to take any run. A nice ball. And with this, we come to the end of the first over. And the scoreboard looks something like this. Team SP11 is on 7 runs without any loss. टीम सीआईएसएफ और SP11 के बीच ये फाइनल मुकाबला। Pretty much the same beginning as of team CISF. The next bowler from team CISF is Mr. Arun Sharma. अरुण शर्मा जो अब तक ऑलराउंड प्रदर्शन से सारे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। A very valuable asset for team CISF. और दिशा से भटकी हुई गेंद एम्पायर ने वाइड करार दिया। Mr. Arun Sharma looks a bit out of form in this match. Just kept by the batsman. Slowly kept. Another delivery from Arun Sharma.
अच्छी बॉल, आलुकेश ने स्क्वायर लेग की दिशा में खेलकर 1 रन चुराया। Slowly flicked by the wrist towards the square. आलुकेश और एमएम हसन द्वारा बहुत ही सूझबूझ तरीके से बल्लेबाजी का नजारा यहाँ पर एचआरएल के सुनहरा मैदान पर। A very good coordination in between the players of SP11. Another nice touch over the head. And 4 runs. ये दंदनाती हुई, सरसराती हुई 4 रनों के लिए। इस 4 रनों की सहायता से टीम का स्कोर 14 रनों पे पहुंचता हुआ। Played the same way again, but this time couldn't make it to the boundary. Couldn't take 1 run too. अरुण शर्मा की अगली गेंद एमएम हसन को। Another high up in the air, going towards the fielder and caught by the fielder. Good catch taken by the fielder of team CISF. अच्छा कैच लिया। DJ. A much needed wicket needed by team CISF. And with this, MM Hassan leaves the field. The new batsman entering the field is Mr. Gourango, a much heard name from team SP11. Let's see what changes he can make in the scoreboard. Team SP11 looking forward for contribution from him. आपको बता दे हमारे यहाँ कमेंट्री बॉक्स में कुछ आईपीएल के सिलेक्टर्स भी बैठे हुए हैं। सुबह अरुण शर्मा की बोली सबसे ज्यादा लगी थी। Another beautiful shot. और went out of the field. शानदार छक्का। Beautifully played on the long on. Beautifully played by Mr. Alokesh. आलोकेश का इस पारी का पहला छक्का। आलोकेश सेमीफाइनल मैच में अपना 50 पूरा किए थे। देखते हैं इस मैच में क्या कर पाते हैं। The third over is in progress. Beautifully kept by the batsman, not taking any risk. SP11 का अभी भी स्कोर 20 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। Run rate for team SP11 is 10. Just dropped by the wicketkeeper, could have taken it. Another live for team SP11. Played over the head of the wicketkeeper. Manages to take 1 run. अच्छी गेंदबाजी प्रकाश सिंह द्वारा। Team SP11 trying to put all their senses to batting. और आलोकेश ने खेल दिया है
डीप मिड विकेट की दिशा में, एक रन चुराने में कामयाब हुए आलोकेश। इस एक रन की सहायता से टीम का स्कोर 22 रन्स। Team SP11 are maintaining a very good run rate. If they continue to maintain this run rate, and the beautiful shot, nicely played towards the long on. SP11 के बल्लेबाज आलोकेश और गोरंगो स्ट्राइक रोटेट करने में बिलीव कर रहे हैं। कहा जाता है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Also, they do not need to any hurry. A beautiful piece of bowling. इस तरह से तीसरे ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर 23 रन्स, लॉस ऑफ 1 विकेट। SP11 वर्सेस CISF 11 के बीच ये फाइनल मुकाबला। CISF ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए। SP11 को इस मैच को जीतने के लिए 90 रन बनाने होंगे और अभी तक 23 रन बना चुकी है SP11 की टीम। No predictions can be made. Both the teams need to plan their strategy and they need to play very consciously. नए गेंदबाज के रूप में आए हैं CISF की तरफ से भारती, जो बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन किए थे। अब गेंदबाजी में क्या करते हैं देखना होगा। Nicely placed. अच्छी बल्लेबाजी और पॉइंट की दिशा में अच्छा क्षेत्रक्षण। सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब हुए SP11 के बल्लेबाज। Team CISF slowly trying to make the game in their favor. Slow touch. Successfully stole 1 run in between the wickets. Good efforts from Team CISF. इस 1 रन की सहायता से टीम का स्कोर 25 रन। और ये उठा के खेलना चाहते थे, गोरंगो कनेक्ट नहीं कर पाए बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी खासी अपील CISF के क्षेत्ररक्षक द्वारा एम्पायर बंसल ने पूरी तरीके से नकार दिया। A very good over is being carried out by Mr. इस अपील में जोश ज्यादा था, विश्वास कम। और ये गौरंग ने उठा के खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। Over the community box. Mr. Bharti faces his first 6 in this over. इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 31 runs. At the loss of 1 wicket. Another strong hit at the very same way. छक्का गौरंगो द्वारा। Back to back success. Huge success from Team SP11. Trying to regain their form. Team SP11. Team SP11 successfully figured out the type of bowling during the last 2 balls
and made 2 consecutive sixes. Now team CISF need to plan their bowling and they cannot afford any more boundaries. The new bowler from team CISF is Arun Sharma. A very good shot from team SP11. Beautifully hit by Mr. Alokesh on the long off. इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 43 रन्स High up in the air and caught by the fielder of और एक CISF. बहुत ही अच्छा कैच और इस तरह से अलोकेश की पारी का अंत हुआ छक्के मारने के प्रयास में अलोकेश और रनिंग करते हुए हिमांशु का एक अच्छा कैच Let me say that catches like this are very tough to take as it is dark. टीम का स्कोर 43 रन्स लॉस ऑफ 2 विकेट्स The next batsman entering the field is Mr. Rahul Pandey for team SP11. SP11 को यह मैच जीतने के लिए और 47 रनों की जरूरत High hopes from Mr. Rahul Pandey. और ये फिर से स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन गौरव का ताबड़तोड़ छक्का DJ Vishal. Another 41 runs required by team SP11. गौरंगों के लिए गायन के तरफ से उनके साथी खिलाड़ी अब घूमेगा बल्ला अपने शेर का रनों की बरसात होगी घुटने तेज देगा हर बॉलर अपने जीत की बारात होगी CISF 11 और SP 11 के ये बीच फाइनल मुकाबला To make a strong hit but failed, yet managed to take 1 run. अच्छा शॉट राहुल पांडे द्वारा और इसी रन की सहायता से अपना खाता भी खोले राहुल पांडे Another strong hit. गौरंगों High ने up in the फिर से air. स्क्वायर लेके ऊपर से 6 रन A very good 6 from team SP11. Another 33 runs required from 30 balls. हम अपने साथी कमेंटेटर जय सर से जानना चाहेंगे कि क्या गौरंगों को अपने टीम में सिलेक्ट करेंगे या नहीं Oh yes, he's playing a wonderful innings. Is one of the prime positions of the team. Great match, a very exciting final going on. The finals evenly posed,
Any team can win the match. And 30 balls, 35 runs are required. CISF 11 has put up a very tough अच्छा सिलेक्शन होगा सर. target, as well as they are growing ahead with a very good fielding. At the same time, SP11 are going for big shots now. We have seen a flurry of sixes in the last few overs. Mr. Devavrata Biswas, Mr. Subhashish Pal is looking for you, please. नए गेंदबाज के रूप में आए एस कलिता. SP11 को जीतने के लिए 30 गेंद में 31 रनों की जरूरत. सॉरी, Nicely played towards the commentary box. और ये And the fielder mid-wicket missed की दिशा to में save it. 4 रन. Successfully stole 4 runs in between the fielders. With this, Team SP11 makes 61 runs. Another 29 runs required. In 29 29 balls. 29 बॉलों में 29 रनों की जरूरत. और ये राहुल Huge पांडे shot. फिर से उठा के खेल दिया है, लेकिन बहुत ही ये शानदार almost- कैच. Was almost going to the boundary but caught by the fielder. Team SP11 loses another wicket. हिमांशु का ये दूसरा शानदार कैच, जो अपने टीम के कप्तान है और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं. New batsman entering the field for Team SP11 is Mr. Dibyendu. कलिता की अगली बॉल बीट किए पूरी तरीके से. Team SP11 trying to finish the match quickly but couldn't make a contact with the ball. Slightly अच्छी गेंद. played towards the commentary box. Took 1 run. इस 1 रनों की सहायता से टीम का स्कोर The current score is 62. Another 28 runs required by Team SP11. Another huge shot going towards the fielder and caught. और एक अच्छा कैच. Beautifully caught गायकवाड़ by का Team पूर्वानुमान बहुत ही CISF. अच्छा था और रनिंग करते हुए एक अच्छा कैच लपका गायकवाड़ ने. Beautifully caught by M. Gaikwad. और दिव्येंदु पवेलियन की राह लौटते हुए उनका No स्थान लेने आ significant. रहे हैं आलोक गोस्वामी. Mr. Alok Goswami is very well known for his bowling. Let's see what miracle he can make with his batting. SP11 और CISF 11 के बीच ये फाइनल मुकाबला. SP11 को यह मैच जीतने के लिए सिर्फ 28 रनों की जरूरत. और 27 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए SP11. 24 गेंदों में 27 रनों की जरूरत. 24 balls, 27 runs needed. Currently, the 6th over is in progress. Team SP11 is currently at the loss of 4. 6 ओवर की समाप्ति पे टीम SP11 का रन
63 रन्स, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। सीआईएसएफ को यह मैच जीतने के लिए 6 विकेट निकालने होंगे। एसपी11 को यह मैच जीतने के लिए 27 रन बनाने होंगे 24 गेंदों में। Lit by the floodlights of the HRL playground. The playground looks very colorful by the jerseys of both the teams. और गरंगो जैसे बैटिंग कर रहे हैं, ये उनके लिए टेढ़ी खीर साबित नहीं होगी। Both the teams need to play नए very बॉलर प्रकाश cautiously. सिंह। Any slight mistake by both the team will be very costly for them. The match is still deciding. Beautiful piece of bowling. अभी भी एसपी11 को 23 गेंदों में 27 रनों की जरूरत। Mr. Prakash Singh showing his skills on the pitch. क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। Another beautiful piece of bowling. No doubt white team CISF और एक believes सूझबूझ एम्पायरिंग, on एम्पायर Mr. ने दिशा से भटकी हुई गेंद को वाइड करार दिया एसपी11 को, और 26 रनों की जरूरत 23 गेंदों में। The last ball was wide. 26 रनों की जरूरत 23 गेंदों में। बॉलर है प्रकाश सिंह, The match, बैटिंग करेंगे गौरंगो। the match between CISF and Team SP11 is currently ongoing. Nice bowling. by नाइस team बॉलिंग बाय प्रकाश CISF. सिंह। We would like to welcome all the audience members who are present here joining us to witness this beautiful match. यह मैच अग्रमणि स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। You can watch this match at your own comfort, at your own home on YouTube. और बहुत ही अच्छी गेंद, बॉडी लेंथ की गेंद थी। गौरंगो बेताल समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। मैच का रोमांच धीरे धीरे चरम सीमा पर पहुंचता हुआ एचपीएल कप 2022 का यह फाइनल मुकाबला एसपी11 वर्सेस सीआईएसएफ11। Another 26 runs required. अच्छी गेंद, Back to back dot balls from Gourango. 26 runs required from 20 balls. Team SP11 trying to gain back their form. एसपी11 को और 26 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। Trying to bring improvement in their batting. अच्छी बॉल, प्रकाश सिंह की बहुत ही A good अच्छी length ball. सदी हुई गेंदबाजी, नापी-तुली गेंदबाजी। Good fielding. The fielders are very alert from Team CISF. प्रकाश सिंह मैच का रुख बदलते हुए Not letting the team members of Team SP11 take any run. Could only manage to take one run. टीम सीआईएसएफ के प्रकाश सिंह अपने टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। दर्शकों का भरपूर साथ। अगली गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, A very ब्लॉक होल good में बॉल ball. थी, समझ नहीं पाए। The audience is Goswami. continuously encouraging the players.
प्रकाश सिंह इस ओवर में सदीवी गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 2 रन खर्च किए। Mr. Prakash जानते Singh, हैं कि उनके झोली में बहुत ज्यादा रन नहीं है। Mr. Prakash Singh gave his all in the last over and tried his best to make the maximum pressure on team SP11. SP11 को यह मैच जीतने के लिए 18 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। 18 गेंद 25 रन। The last over just changed the direction of the game. The required run rate for team SP11 has climbed up to 8.33. The new bowler from team CISF is Escolita. A huge 6, sky piercing 6. A bit disappointment by Escolita. Let me remind that Mr. Escolita successfully gave just 5 runs in the last over. गरम को पिछले ओवर में थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन भंग हो गया था उनका, बट इस ओवर में छक्का जड़ दिया। SP11 को और 19 रनों की जरूरत। Team SP11 needs to maintain their consistency. CISF 11 और SP11 के बीच ये फाइनल मुकाबला। A very thrilling point in match. और ये Strong शॉर्ट hit. बॉल का भरपूर फायदा उठाते हुए गौरंगों ने 6 रन जड़ दिया। इस 6 रनों की सहायता से टीम का स्कोर Nicely played in the mid wicket. 78 रन। SP11 को SP11 को इस मैच को जीतने के लिए और 12 रनों की जरूरत, 2 छक्के की जरूरत। अच्छी बॉल, But yet managed to take 1 run, leaving no chance. CISF के लिए बोलना चाहूंगा, हार न मानो, अभी भी मौका है। Housekeeping, somebody to come to stand, please. Team CISF looking a bit worried after some sixes. अच्छी बॉल, आलोक Nicely गोस्वामी played ने on the long off. कवर की दिशा में खेलकर The fielder didn't let them to take 2 runs. They have to be satisfied with just 1 run. And with this, another 10 runs are required by team SP11. Another 13 balls to go. 13 बॉलों में 10 रनों की जरूरत। A strong hit एक over the गौरंगों boundary का box. एक लंबा छक्का। Team SP11 chooses to make long boundaries rather than just touching the ball. गौरंगों को पहले ही जय सर ने चुन लिया था, जिसका इफेक्ट भी दिखा उनको। ताबड़तोड़ छक्का पे छक्के जड़े जा रहे हैं गौरंगो। Mr. Gorango is currently on 48 runs. सेमीफाइनल मैच में आलोकेश ने चार्ज लिया था और ये फाइनल मुकाबला में गौरंगों ने चार्ज लेकर अपने टीम को नैया के कगार पे पहुंचा चुके हैं। और
4 रनों की जरूरत 12 गेंदों में। नए गेंदबाज आए हैं हिमांशु। Team CISF is still in hopes and they are not giving up, continuously making changes in their fielding pattern, still believing that they can make some difference. Out claim. और ये And the रन umpire आउट gives it होके out. आलोक गोस्वामी जाते हुए पेविलियन। Team CISF really took the wicket, which was much needed by them. आलोक गोस्वामी शायद चाहते थे कि विजयी रन गौरंगों की तरफ से ही निकले, इसलिए The next batsman entering the field is Rajkumar Devnath. Mr. Rajkumar is batting for the first time. गौरंगो जो 48 रन बना के नाबाद खेल रहे हैं, टीम को चाहिए 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। Slightly paid. और ये खेल दिया है। Mr. Gourango कवर की दिशा decided. में सिर्फ 1 रन बनाने में संतुष्ट होंगे। Mr. Gourango decided to rotate the strike. He let his fellow teammate to make the last winning points. राजकुमार देवनाथ स्ट्राइक लेंगे। एसपी Another- 11 को और 3 रनों की जरूरत। और ये उठा के खेल दिया है राजकुमार देवनाथ ने। Very strong hit. Very strong चैरियल के hit. सुनहरा मैदान में And with this- शर्त आती हुई 4 रनों के लिए। And with this, team SP11 wins. और इसी तरह एसपी 11 ने एचपीएल कप 2022 को जीत लिया है। After stepping in the tournament for the very first time, they managed to make a place in the finals and winning it too. एसपी 11 ये फाइनल मुकाबला 5 विकेटों से जीत लिया है, जिसमें गौरंग बताल का एक शानदार बल्लेबाजी रहा। A beautiful match between CISF and SP11. सीआईएसएफ के गेंदबाज भी बहुत अच्छे तरीके से फाइट किए, Beautiful performance from CISF. रनर अप रहे इस एचपीएल कप 2022 का। Both were very tough teams and very strong, and both deserve to be in finals. एचपीएल कप 2022 का फाइनल मुकाबला एसपी 11 वर्सेस सीआईएसएफ 11 के बीच खेला गया। एसपी 11 ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया। And with this, we come to the very end of the HPL Cup Tournament 2022. After this, we will be having the closing ceremony. Hello, hello. Good evening, everybody. What a match. CISF well fought and
SP11 is the winner. A great tournament with a great sportsman spirit. Yeah, one can hear that halla gulla of winning the tournament today. Yeah, the SP11, you deserve it. You've really fought it well. Gentlemen, another few minutes we'll start with the closing ceremony. And after taking a breather, I'll request all the 4 teams which have played semi-finals today, they can assemble here at 7:42:43. I'll request all the 4 teams to assemble at 7:42:43. And these teams are SP11, CISF11, HPL11 and HD11. And we also thank the other 4 teams. I think their representation, they're also present in our spectator stand. Thank you so much for coming and representing your teams today. So these 4 teams, I'll request them to please come on the ground at 7:42. You can take a breather. At 7:42:43, please line up for the closing ceremony and the prize distribution ceremony. 7:40. Another most important issue of the day, when the weather was playing havoc with us, once again I must thank our groundsman, our team led by Mr. Barun, who did an exceedingly good job, and they prepared the pitch within 2 hours after the rains, and it was back to the life, and thereafter could it continue. Otherwise there were a lot of ifs and buts, can we continue today or not? But with the good effort of all our groundsmen and the other supporters, finally it turned out to be a great match. And again we would like to thank all the team captains who very supportingly accepted that what was to happen after the rain, because as you know the pitch can go in favor of the batsmen or in the bowlers, but they accepted it gracefully and they continued with the match after that and had no objection to it. And thereafter of course we had to even reduce 2 overs from 12 to 10 for semi-finals and the finals. There also, again, they very willingly they cooperated and they gave their consent to continue with the matches. Thank you so much. It was in the real sportsman spirit, and actually we have beaten the heat. A round of clap from all of us to all the captains and all the participating teams. 8 of them, actually 4 of them are in the semi-finals, and other 4 teams also. I must announce those teams happen to be, they were IOCL, 1 team, and then we had Coast Guard team, then we had team from MCPI, and then we had a team coming from Calcutta all the way, which was from the corporate. They also could play for 2 days, and they left today in the morning since they have to join the duties tomorrow morning. Thank you to them also. We have Animesh, their representative here. So thanks Animesh for sending the team and getting them here. Thanks a lot. We also have some of our dignitaries who are going to join us shortly. We will be having Mr. Ashok Ghosh, head plant, coming to us. Then we have shortly coming to us, maybe here or in the dinner time, ED IOC who will be joining us. We are also expecting CEO HDA. He is also joining us. And then SP also is like to reach in 10 minutes. So thank you so much. And we also have from our Labour Department, Deputy Labour Commissioner also present over here. Thank you so much for gracing the occasion. You have been the boosters. In fact, that was the purpose of the whole exercise, that we interact with each other after the 2 years of the confinement to our houses, to our offices, and wearing the mask and keeping the sanitizer. So the purpose of beating the heat has been achieved, and I'm sure, as I said, the tough get going when the going gets tough. So people have been really tough, and you have been making it to happen, and I'm sure the corona will be away from us hereafter. Thank you so much. But anyway, notwithstanding that, please follow all the COVID appropriate behavior issues, wear your mask, keep away from each other, so that again we don't fall victim to this so-called pandemic which has been troubling our life since long. Thank you.
Actually, it's for all of you, though some of us have already heard of it. So there is a request for a couplet. So आप सबके लिए है, जरा ध्यान से सुनिएगा. All those who are talking to each other, listen carefully. आज मेरी खुदा से मुलाकात हुई. आज मेरी खुदा से मुलाकात हुई, थोड़ी ही सही मगर काफी बात हुई. मैंने खुदा से पूछा, ये सब बंदे जो इस फील्ड में खड़े हुए हैं, ये कैसे हैं? मैंने खुदा से पूछा, ये सब बंदे जो इस फील्ड में खड़े हैं, ये कैसे हैं? खुदा ने मुस्कुरा के कहा, इनसे रिश्ता बना के रखना, ये कुछ मेरे ही जैसे हैं. Thank you so much for being here. Thanks a lot for being here. We have with us our head of plant, Mr. Ashok Kumar Ghosh. We are ready for the closing ceremony of this wonderful tournament, HPL Cup 2022. We request the players, the 4 teams in the semi-finals to please come to the presentation dais. Yeah, please get lined up for the closing ceremony and the prize distribution. Yeah, please start moving in. Thank you. Thank you so much. All the 4 semi-finalist teams. We want our seniors also to come to the presentation dais. Animesh, Abhijit, Mr. Ashwin Nagpal. Aye. The way you lined up yesterday in the morning, just please maintain social distancing, wear your mask, and just please come over and stay in front of this dais, in front of this stand. Thank you. We are really grateful to the ground staff who did a wonderful job today after the rains and made this finals possible. Without their untiring support and dedication, this wouldn't have been possible. Another big cheers to them. Hip hip! Hip hip! Hip hip! We also have the DGM HR from ILC, Mr. Kosh, Mr. Biplab Majumdar, the Deputy Labour Commissioner, Okay, to celebrate the victory of SP11, let's have a bit of fireworks in our capacity, whatever little bit we have done. Yeah, can I request the people to have a bit of fireworks to celebrate the victory for SP11? Oh, yeah,
all the semi-finalists. Thank you so much. Basically, we are celebrating it for you. And of course, the victory of SP11. Being a petrochemical industry, we are slightly cautious and careful. So it may not be. Yeah, thank you. Now may I request Jay to please take on the closing ceremony. We can all clap at least with this firework. Not bad. Wonderful fireworks to celebrate the victory of SP11. It was a hard-fought final between SP11 and CISF 11. We come to the end of this wonderful tournament, HPL Cup 2022. We have with us That's how you motivate. while we wait for the other dignitaries to arrive, we'll start with the presentation ceremony. We request all the seniors to come to the presentation dais. Mr. Barun Rai, Animesh, Avijit, Mr. Nakpal, Mr. Shamiron, Amaresh. Please come to the presentation dais. To begin with, we'll be giving away the individual mementos to the 4 semi-final teams. To start with, I request Mr. Barun Rai to hand over the individual mementos to HDA 11. HDA 11, Captain Mr. Suchandan Samanto, Sheikh Abujan Ghaffari, Mr. Arpan Samanto, Mr. Vivekananda Modi, Mr. Bitam Sharkar, Mr. Sapan Singh, Mr. Shahrukh Khan, Mr. Pranab Ghosh, Mr. Manoj Maiti, Mr. Shanu Datta, Mr. Shuman Ram, Mr. Abhijit Kaur, Mr. Sandeep, Mr. Shogogata Shamanto, Mr. Bapon Pal, Mr. Pradeep Pal, the team manager, Mr. Pradhan, and thank you, Mr. Varun Rai. Thank you, Team HDA.
we next have Team HPL, and I request Mr. Biplav Majumdar, the Deputy Labour Commissioner, to hand over the mementos to Team HPL. Team HPL, led by Captain Mr. Shoman Mondal. Mr. Obirup Addo, Mr. Hanuman Sethi, Mr. Devdatta Ghoshal, Mr. Mohit Mohan, Mr. Dheeraj Prasad, Mr. Shovandev Shahu, Mr. Suvarna Das, Mr. Keshav Sarkar, Mr. Ratul Bowal, Mr. Sudeep Shah, Mr. Shobhit Singh, Mr. Pallav Raman, Mr. Orkha Dhudait, Mr. Lokbir Pradhan, Mr. Nilmani Bhattacharya, Mr. Avijit Das, Mr. Pradyumna Kumar Das, and Mr. Shoman Pradhan. Thank you, Mr. Majumdar. I request Mr. Kush, DGMHR from IOC, to hand over the team mementos to Team CISF. Team CISF, led by Mr. Himanshu Kumar, Mr. Desh Deepak, Mr. Ashish Singh, Mr. D. Prakash, Mr. Arun Sharma, Mr. Naveen Bharati, Mr. S. Debnath, Mr. S. Kalita, Mr. J. D. Prasad, Mr. P. Venkatesh, Mr. S. Sasmal, Mr. B. D. Pariyad, Mr. S. K. Samal, Mr. Munna Kamar, Mr. A. M. Gaikwad, Mr. S. Kailash, and Mr. Krishanu Pal. Come on, cheer up. CISF, a big round of clap to CISF for reaching the top two and giving a actual decent and a tough match when they were playing with our SP11 team. Thank you so much for making a decent tournament. Thank you. Mr. Himanshu Kumar, the captain of CISF 11, a few words from you, please. थैंक यू फॉर गिविंग मी चांस टू स्पीक। जैसा कि मैं पहले ही बोला था, क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी। हमने बहुत अच्छा खेला, साथ ही SP11 ने और भी अच्छा खेला। एक ही एक ओवर में कभी गेम इधर आता है तो कभी गेम उधर चला जाता है, तो ये गेम है, हार जीत लगा रहता है, कभी कोई जीतता है तो कभी कोई। हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला और यहाँ पे जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ है ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज किया गया है और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया यहाँ पे और बहुत सारे लोगों के साथ मिले और उनसे हमारी फ्रेंडशिप हुई। सभी जिसने भी ऑर्गेनाइज करवाया है, मैनेजिंग कमेटी, ऑर्गेनाइज कमेटी, सभी को धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, Himanshu. I now request Mr. Ashok Kumar to hand our Major General, Mr. Ashok Kumar, to hand over the mementos to the winning team, SP11. SP11 led by IPS, Mr. Amarnath, Mr. M.M. Hassan, Mr. Rahul Pandey, Mr. Rajkumar Debnath, Mr. Dilip Chakraborty, Mr. Kaushik Dhal,
Mr. Victor Datta, Mr. Resh Bihari Mohapatro, Mr. Durga Karmakar, Mr. Izamul Gayan, Mr. Alok Goswami, Mr. Sanjay Doloi, Mr. Gaurango Bera, Mr. Alokesh Das, Mr. Dibbendu Maji, Mr. Mintu Das, and Mr. Sambhu Shahu. Thank you, Major General Ashok Kumar. I now request Mr. M.M. Hassan, the captain of SP11, the winning team, to say a few words. Good evening, everybody. First of all, my sincere thanks to the organizing team, because we got such an opportunity to play under floodlight like almost after decades. And special thanks to the finalist team. They were very good, but as he said that cricket is a game of uncertainty. Today we turned up to be a better team, but my sincere gratitude to them for such a wonderful match. Lastly, the special thanks from our team to the field staff, because because of the inclement weather, it was really impossible to expect the final. So thank you, and a round of applause for him. Lastly, once again, HREL, we request that the SP11s are invited again in the next endeavor. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. With this, we also announce the arrival of our guest of honor, Mr. Panikar, Indian Administrative Officer. He is CEO HDA, as you all know. Thank you so much for coming. He is here with us now. Thank you. Thank you, sir. So now we move to the prizes for the match. I request Mr. Panikar Harishankar to do the honors, please. The man of the match for the final is Mr. Gaurango Bera of SP11. He scored 49 runs out of 26 balls, and his innings included 7 sixes. Mr. Gaurango Bera, the man of the match for the final. The best catch of the tournament goes to Mr. Shahrukh Khan of HDA. Thank you. The best batsman of the tournament, without any doubt, it is Mr. Arun Sharma of CISF. 126 runs, which included 2 half centuries. Thank you, sir. I now request our head of the plant, Mr. Ashok Kumar Ghosh, to do the honors, please. Sir. So we have next the bowler of the tournament, and it is Mr. Sanjay Doloi of SP11. He has taken 4 wickets with 2 maiden overs. The best bowler of the tournament, Mr. Sanjay Doloi. Next is the best fielder of the tournament. It is Mr. Mintu Das of SP11.
He has also is one of the best fielders, which included wicket keeping and bowling also. The best fielder of the tournament, Mr. Mintu Das. The man of the series, it is Mr. Arun Sharma from CISF. 126 runs and 6 wickets. He has taken a few catches, an excellent all-round fielding from him, a real all-rounder. Mr. Arun Sharma from CISF. I also request Mr. Panikar to join the presentation dais. We'll be handing over the runners-up and winners' trophy. The runners-up trophy goes to CISF 11. Three cheers to CISF. Hip hip, hip hip, hip hip. Sir, please come this side. Thank you, Team CISF. Now, for the winners' trophy, SP 11. Three cheers for SP 11. Hip hip, hip hip, hip hip. Thank you, SP 11. I now request our head plant, Mr. Ashok Kumar Ghosh, to hand over a few mementos to our chief dignitaries. I request Mr. Ghosh to hand over a memento to the CEO of HDA, Mr. Panikar Harishankar, IAS officer. I request Mr. Ghosh to now hand over a memento to Mr. Biplab Majumdar, the Deputy Labour Commissioner. I now request our head plant, Mr. Ashok Kumar Ghosh, to say a few words.
Good evening to all of you, and respected CEO, SDA, Deputy Labor Commissioner, GM from IOCL, and all of my senior colleagues here, and the organizer of this tournament it was very nicely, I personally feel it is very nicely organized. And first of all, I'd like to thanks to all the teams, those who have participated here for this tournament. Basically, we thought it is a friendly tournament. Well, somebody has won, some team has won, that's fine. But it's a friendly tournament. After a long time, after a very stressful time we have passed last 2 years. So we thought that let us have some sort of get together so that we can meet in an open environment here at HREL. So last 1 month we spent a lot of time to build this facility here. I don't know how much you have felt or enjoyed here while playing here, but we have put our wholehearted effort to develop this facility here. And the purpose of this tournament, in back of my heart, that in Haldia, the industries, major industries, and the administrative authorities here, we jointly can do a lot of things cohesively, collectively together in a collaborative approach, so that we can build Haldia a nice city, a environment-friendly city, and a lot of opportunities in coming years. Haldia itself is having a huge potential. Personally, I feel that there's a huge potential here, and together we can do a lot of things, and this will facilitate to build our relationship. That was the purpose behind this tournament, and I hope this will take a long way in coming years. Thank you very much to all of you for participating in this match, and we are here. We'll work here very cohesively in a collaborative approach, and we'll try to develop this city as a one of the best city in not only in West Bengal, in Indian map. Thank you very much to all of you. Thank you, sir. So I would like to request you to also hand over a few more mementos to the HREL ground staff. I call upon Manoj Bera. Manoj Bera, আপনি এসে আপনাদের সবার জন্য আমাদের মোমেন্টো ঘোষ সাহেবের হাত থেকে নিয়ে যান। Mr. Manoj Bera, on behalf of the ground staff, আপনি পরে বাকিদেরটা নিয়ে যাবেন। Now আমাদের ক্লাব স্টাফ সুরজিৎ মাইতি, স্বপন সামন্ত আর বিশ্বজিৎ বেরা, এরা প্রচুর কাজ করেছে এই টুর্নামেন্টের জন্য। স্বপন সামন্ত, বিশ্বজিৎ নেই, বিশ্বজিৎ, থ্যাংক ইউ। তারপরে আমাদের প্লান্ট থেকে অমল মাইতি আর প্রশান্ত দাস, আচ্ছা তারা নেই। এখন we'd like to give away mementos to the organizers for this tournament. Special reference goes to Subhashish Pal, Somnath Nandi and Shubhrata Sarkar. Three of them have put in a lot of background effort to ensure success of this tournament. Without their help, without their dedication, this tournament wouldn't have been possible. I request them to come forward to collect the mementos from our head plant, Mr. Subhashish Pal,
Mr. Somnath Nondi, Mr. Shubroto Sarkar, Mr. Debobroto Biswas, Mr. Ayush, Mr. Borun Rai, Mr. Dilip Kumar, Mr. Shushanto Ghosh, Mr. Sajan Chabra, Mr. Abhishek Maiti, Mr. Pallav Raman, Mr. Somnath Shah, Mr. Bivash Roy Chaudhary, Mr. Shomiran Sarkar, and one for me also. And last but not the least, the umpires have done a wonderful job. So I request the umpires, Mr. J.K. Banswal. Oishik Maiti. The commentator from HRL Boys. For the umpires, Mr. J.K. Banswal, Mr. Avijit Mandal, Mr. Proshajit Pradhan, and scorer Sheikh Abdul Hakim. Fantastic job done. Thank you, sir. Now I request our chief guest, Mr. Panikar Harishankar, to deliver his address, please. Respected planned head A.K. Ghosh sir, other members of HPL fraternity, all friends gathered here, team members, other support staff, and all the organizers of the tournament. I would like to first thank every one of you for being here late in the night, and you can see the fog is also coming, but still all of you are here. As you know, cricket is a gentleman's sport. More than a sport, it's also a discipline, and the teamwork that you have showed here, the relations that you have built here, I hope that you can take this beyond the field and off the field, and the relations you with the industries as well as with the police, CISF, and everybody here who have worked together for this tournament. This is a learning exercise for all of us of how to properly organize a tournament also. I would like to thank Major General Sir for inviting me here. His personal invitation, he had rang me up 3-4 times also. And seeing the field and seeing how well it is organized, I'd really like to congratulate the HPL fraternity for your organizational skills and your professionalism. And let's hope that we have more such tournaments, not just in cricket but also in other sports and other disciplines as well, to create a feeling of camaraderie and a feeling of positiveness. In the last 2 years we've been fighting the COVID pandemic. Now we've seen that it's not just about fighting the pandemic, it's also fighting your mental strength, having a mental strength to keep on going, and also having a physical strength also. Sports and such disciplines like cricket help in boosting your mental as well as physical strength, and we should promote this not just with ourselves but also amongst our friends and our family members. And I will thank every one of you for being here once again. Jai Hind. Thank you. Thank you so much, Mr. Panikar. I request our Major General Ashok Kumar to deliver the vote of thanks, and just after the vote of thanks, we'll have a group photograph with our dignitaries and our HPL people and the support staff here at the field. Yeah, good evening to all of you. At the very outset, let me first thank our top management and the head plant for conceiving this idea wherein we were to organize a tournament comprising the teams from the industry as well as from the civil side, because they are the one who have been really fighting Corona while performing their duties under the various conditions. So as I said other day, the aim was to beat the heat of Corona. Though today, the weather, I don't know how come Corona got hold of Indra Devta to spoil the sport. But again, hats off to our ground team led by Mr. Barun, who physically on the ground worked for 2 hours
to make the pitch functional and make this match happen. And even the finals had to happen. And the people who were present here, they have seen. And this also shows the spirit of our HPLites. Okay, we can do it. We are like Americans. We can. So that is the spirit which one was looking forward. Great, achievement from that point of view. Then I'm also very grateful to you, Mr. Panikkar, for sparing your time and coming over to us, even on our inaugural day. Again, we are thankful to DIG, Mr. Pankaj, who was here with us to be part of that day inaugural ceremony. So, and last but not the least, all the names have been announced. Thank you once again to the team HR and admin, the team from the club, that club staff, and the, of course, HRL staff. Wonderful guys. This is the kind of the synergy and the team you look forward, and this is the kind of the end result you see. Thank you so much. God bless you all. My best wishes for the all future endeavors. Thank you. Please gather here for the group photograph. এই সবাই আসো। Three cheers for HPL. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Pure! স্যার এখানে চলে স্যার একটু এদিকে চলে আসুন।